नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज नो योर कंपनी कुछ खास है क्योंकि इसमें आज हम एक कंपनी नहीं, एक इंडस्ट्री के डायनामिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ समय में जो डीमैट के नंबर्स कम हुए हैं, क्या वो एक चिंता की बात है? क्या उससे हमें कोई संकेत मिलते हैं जिसको हमें समझना चाहिए? इसी पे बात करेंगे, ब्रोकिंग इंडस्ट्री की पूरी तस्वीर समझेंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं जीरोधा और ट्रू बीकन के को फाउंडर निखिल कामत। देश का सबसे बड़ा ब्रोकिंग हाउस है और सबसे ज़्यादा रफ्तार से इन्होंने काम किया है और अपने साथ बहुत सारे ट्रेडर और इन्वेस्टर्स को जोड़ा है। निखिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और आपके ज़रिए हम समझना चाहते हैं कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री में इस वक्त क्या तस्वीर है। तो जिस तरीके के नंबर्स अभी हमने देखे, ऑल गुड इन बिजनेस? हाय नीरज, तो ओवरऑल अगर आप ब्रोकिंग इंडस्ट्री को देखेंगे तो वो मार्केट साइकिल से ज़्यादा कोरिलेटेड रहता है। When stock markets do well, everything related to stock markets do well. मैं आपके स्क्रीन पे सिप के नंबर्स देख रहा हूँ and you know like when the new money coming into the market is lower by virtue of a downward cycle, so all the businesses which are correlated to this industry generally suffer. तो it would probably be fair to say कि इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में आप एसेट मैनेजमेंट बिजनेसेस, म्यूचुअल फंड, ब्रोकिंग, इन सब बिजनेसेस में थोड़ी स्लो डाउन देखेंगे, मे बी लाइक 20-25% स्लो डाउन ओवर द नेक्स्ट क्वार्टर और टू। तो निखिल, क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा ज़्यादा झटका लग रहा है, इस वजह से वो जा रहे हैं? हाल ही में, यानी कल ही शायद हमारे ख्याल में NSE ने जो अपना एक बड़ा बिग डेटा इशू किया है, मार्केट पल्स, उसमें दिख रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उसकी पोजीशन ओवरऑल मार्केट में होल्डिंग वाइज एज इट इज़ है। डेफिनेटली वो इन्वेस्टर्स ही होंगे, लेकिन FIIs ने 5% और घटा दिया है और वो सारा गया है म्यूचुअल फंड के हिस्से में। तो क्या रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा डरा सहमा सा है, या उसको लगता है कि बहुत पैसे नहीं बन रहे? मेरे ख्याल से टू पास दैट जजमेंट अभी शायद टाइम नहीं आया है, इट्स टू अर्ली। Markets went up 100% from pandemic levels and they've corrected about 20%. तो अगर आप किसी स्टॉक की प्राइस ऐसे देखेंगे कि 100 से 200 होके फिर 160 को आ गई, in terms of scale on a relative basis it's not significant. जो भी इन्वेस्टर मार्केट में जिन्होंने निवेश किया है पिछले 2 सालों में, जिन्होंने ज़्यादा लेवरेज नहीं लिया है, a large majority of them have done quite well. So I don't think ऐसी कोई चीज़ अभी तो हो रही है. In the future we have to see. This is very time bound. If another 20% correction happens in the near future, then the situation might change. But as of now, no. और अगर आप पूरे मार्केट में स्केल की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स आर ओनली अबाउट 8-9% ऑफ द मार्केट. लाइक यू वर कंपेयरिंग देम विद FIIs earlier, they are a significantly larger proportion of the market in India. They would be easily 2 times as much as retail. तो अगर FIIs पैसे निकाल रहे हैं and if they are selling and retail is buying, I don't think retail buying will ever make up for FIIs selling by virtue of how much scale these foreign investors have. करेक्ट निखिल, ये बात मैंने इसलिए रखी कि जब लास्ट क्वार्टर की रिपोर्ट आई थी जो दिसंबर 31 तक थी, उसमें ये ट्रेंड दिखा था कि रिटेल की पोजीशन बढ़ी और म्यूचुअल फंड की बढ़ी। मैं दोनों को क्लब कर देता हूँ, दोनों ही बेसिकली रिटेल को रिप्रेजेंट करते हैं। और FII की उस समय भी घटी थी और FII की इस समय भी घटी है, लेकिन इस बार अलग अलग करके देखें तो रिटेल ने नहीं लिया, म्यूचुअल फंड ने ज़्यादा लेपअप किया है। तो इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा था आपसे। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि ये जो आप कह रहे हैं कि आगे जाते हुए 1 क्वार्टर में या 2 क्वार्टर में क्या तस्वीर बनेगी, अभी से प्रेडिक्ट करना मुश्किल भी है और हो सकता है, लेकिन क्या कोई चीज़ आप फोरसी कर सकते हैं जो आपको लगता है कि बिग इशू आ रहा है जिसकी वजह से थोड़ी रिलेक्टेंसी है, और खासतौर पे FIIs की बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंसी है? Well, not just in India, but across the world, inflation has become the predominant issue. अगर आप cost of capital देखें, say a foreign investor who was investing in India, अगर 2 साल पहले he could borrow at 1%, 2% and invest and make 10% here or 12% here, you negate currency depreciation of 3-4% a year, he was still making a significantly good return in India. अगर आज उनका cost of capital 1-2% से 3-4% हो गया है and it looks like it's going up further, their appetite for risk will definitely go down.
And I don't think this is the case for India alone, but across the world. अगर आप emerging economies के markets भी compare करें, तो India has not done as badly as many other markets out there. So on a relative basis, I would say India is okay, but overall the world will see some kind of a slowdown with inflation. अगर आप historically data देखें तो inflation is never a short-lived phenomenon. जब भी इन्फ्लेशन आता है, इट्स नॉट लाइक 6 महीने को इन्फ्लेशन रहेगा और फिर चला जाएगा. जनरली यू सी इट ऑन अ मल्टी ईयर साइकिल. So it would not be maybe wrong to presume that inflation is a problem which is here to stay for a short while at least. And the only counter we really have for inflation is sucking out liquidity from the market by virtue of increasing interest rates, which we are doing. And I think that cycle will continue for significantly longer. ओके कुछ लोग मानते हैं कि इंडिया बहुत रेजिलिएंट है और कुछ लोग मानते हैं कि अभी कैपिचुलेशन हुआ नहीं. आपको क्या लगता है, यही मतलब ये प्रॉब्लम है या ये हमारी स्ट्रेंथ है कि हम करेक्ट नहीं हो रहे? I think strength है. There are many things which are working in our favor. The problems with China are definitely helping India. We have a strong incumbent government which has been at the helm for almost 10 years now, and I think that consistency is appreciated by foreign investors. अगर आप आज भी travel करके international investors को meet करेंगे तो they are skeptical about their markets more than they are skeptical about India. Everybody has an iota of optimism when they speak about India, and I think that will not go away anytime soon. पहली बार बहुत decades में people are kind of coming to terms with how big the opportunity is in India. But it depends kitna time lagega for this to play out. You know, the per capita GDP has to go up significantly from where it is now, in turn lead to consumption, in turn lead to many industries around consumption thriving. But people are taking the long term call कि वो कभी तो होगा. वो कभी तो होगा. निखिल, थोड़ा ये भी हमें एक्सप्लेन करें कि जो इन्वेस्टर और ट्रेडर दो बड़ी डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज़ हैं और आपका एक्सपीरियंस दोनों के साथ होता है, उसमें अगर हम ये समझ सकें कि ट्रांजैक्शन के क्या पोजीशन है, किस में कम ज़्यादा हो रहा है, या आपने पिछले कुछ समय में उसमें बिहेवियरल चेंज देखा हो कि पर अकाउंट ट्रांजैक्शन कम हो रहे हैं ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में ज़्यादा हो रहे हैं, या इन्वेस्टिंग में कम हो रहे हैं ट्रेडिंग में ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा अगर हम लोगों को आप समझा सकें. तो ये नीरज इज क्वाइट सिक्लिकल. जब भी when you see a bull run in the market, investing population will organically increase क्योंकि जो भी invest कर रहे हैं they're profitable, they tell people about it and more investors come in. In range bound and bear markets, it's tough to make money as an investor and you would probably see more trading. मैं ये बताना चाहूँगा कि we talk a lot about stock markets in India. It is extremely important and essential for a growing economy, for us to become developed to the extent that some Western countries might be, that we have a really big and thriving stock market. At the end of the day, stock market is a place where companies can come raise capital and grow. And for any economy which is growing, to have that is very important. India में बात ये है कि only about 2% of our population has either direct or indirect access to stock markets. That number is very, very low. And कुछ तो होना चाहिए change हमारे market में for us to be able to compete with the West, कि ये number 2% से 5%, 6%, 10% कभी तो बढ़े. So it's very important for us to, educate people on how to invest wisely in the stock markets. मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि when education to invest is not ये बात नहीं हुई कि किसी ने बता दिया ये stock लो, वो stock बेचो, leverage लो. I think that is the wrong way to go about it, and generally the odds of you losing money when you do that are much higher. मैं ये बोल रहा हूँ कि people have to learn how to analyze a company, read the company's balance sheets, research a sector, pick which sector to invest in. Learn the importance of diversifying, not taking any leverage, and most importantly learn कि ये tips विप्स कभी काम नहीं करते. अगर किसी को भी पता हो कि कल क्या होगा, वो किसी को बताएगा नहीं, वो खुद जाके खरीदेगा. So for
for you to read a SMS message कि ये कंपनी खरीदो 2 महीने में 50% ऊपर चला जाएगा, Correct. these things don't work. So people have to wisen up to that. नितिन, बहुत इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं. इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल ये है कि क्या एक बिहेवियरल लैंडस्केप चेंज हुआ है, और जिस तरीके का एक बम्प अप हम देख रहे हैं कि डबल हो गए हमारे ट्रेडिंग अकाउंट्स, बहुत सारे नए इन्वेस्टर आ गए, वर्क फ्रॉम होम को थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने काम के साथ साथ ट्रेडिंग भी करने लगे. तो क्या अभी जो आप बात कर रहे थे कि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हम लोग लूजेंड है वहाँ पे, जहाँ पे एक अच्छी एडवाइस, अच्छे कल्चर और इन सब को डेवलप किया जा सके, जो इस बड़े जो ये बम्प अप हुआ है इसको रिटेन कर सके? हाँ बिल्कुल. आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग जो स्टॉक मार्केट को आते हैं, आई थिंक देयर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट राइट जनरली. अगर आप इंडिया में बैंक एफडी में पैसे लगाएं तो आपको मिल रहे हैं 6, 6.5, 7% डिपेंडिंग ऑन व्हाट कैटेगरी यू फॉल इन, एंड यू पे अ मच हायर लेवल ऑफ टैक्स देन यू डू इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स. अगर आप स्टॉक मार्केट में आके 11-12%, like the Nifty has returned on average about 11% a year in the last 10-20 years. अगर आप 11-12% कमा सकें, you pay only 10% long-term capital gain tax, you are beating inflation even today. So it's a incredible opportunity that people should take advantage of. But अगर आप इस इंटेंशन से मार्केट में आए कि मैं 6 महीने में अपना कैपिटल डबल करूंगा या I will make 50% every year, I think then the problem begins, because mathematically, logically, for anyone to do that consistently is next to impossible. So जब लोगों के expectations become more reasonable, I think they will invest in a wiser manner. And 11-12% is a lot. If you can compound money at 12%, you double your money every 5-6 years by virtue of compounding. Yeah, correct. 14-15% CAGR is more than enough for making really wealth, right sir? निखिल, एक नया आपने वेंचर शुरू किया, ट्रू बीकन. क्या है ये, जरा हमें बताइए. तो ट्रू बीकन एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है. जैसे कि म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इट्स अ सिमिलर कॉन्सेप्ट बट इट इज फोकस्ड ऑन अ हायर नेटवर्थ इंडिविजुअल. इसमें सेबी का मैंडेट है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपीस हो. तो हमने क्या किया है कि इसको एक बहुत कंजर्वेटिव फंड बनाया है. द फंड इज परपेचुअली हेज्ड. अभी अगर पूछें तो आज का हेजिंग रेशियो इज अबाउट 50%. आज के दिन में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर मार्केट 10% ऊपर जाए तो वी शुड बी एबल टू कैप्चर 6% ऑफ द अपसाइड, एंड अगर मार्केट 10% नीचे जाए तो वी शुड बी ओनली एबल टू मैनेज विद 4% लॉस. So we are trying to give a better risk-adjusted return to a client. The differentiation of True Beacon with other alternate investment funds in the market ये है कि हम कोई management fee नहीं लेते हैं. हम open-ended है. There is no lock-in. There is no exit load. You can come in today, you can exit day after tomorrow without any fee. And we do daily reporting, unlike many other people in our category. आपको रोज पता चलेगा कि आपकी NAV क्या है, एंड यू विल हैव 100% लिक्विडिटी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. सो ये प्रोडक्ट ये कंपनी हमने 2 साल पहले शुरू की थी. रिचर्ड पैटल जो वाइस प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक प्राइवेट बैंक ग्लोबली के थे, ही हैज जॉइंड एज CEO ऑफ ट्रू बीकन, एंड वी आर सर्विसिंग अबाउट 400-500 क्लाइंट्स अब, जो लास्ट 2.5 years में ज्वाइन किए हैं उन्होंने. And AUM is about 1,500 crore, and it's a company where again we don't do any marketing. It's all word of mouth. It's a very efficient product in terms of fees. The only thing people should remember when considering True Beacon is it's very conservative. ये वो product नहीं है जब market 15% ऊपर जाएगा कि True Beacon will return 25%. ये वो product है कि तो निखिल, इसमें आप profit sharing करेंगे? इसमें हम 10% कैरी चार्ज करते हैं विद अ हाई वाटरमार्क लेवल. Okay, 10%. And minimum requirement is 1 CR. Yeah, SEBI has mandated 1 CR for alternate investment funds. हम Cat 3 AIF हैं. So we can safely say कि ये अल्ट्रा HNIs के लिए है, right? Correct. और इसमें आप सारे एसेट क्लास को अप्रोच करेंगे.
तो हम पब्लिक मार्केट में सिर्फ कैट 3 AIF सिर्फ पब्लिक मार्केट में इन्वेस्ट करता है. तो इन पब्लिक मार्केट इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट. इक्विटी एंड डेट. एंड क्या इसमें आप फॉरेन के NRIs को, तमाम लोगों को भी टारगेट करेंगे? हाँ बिल्कुल. तो हमारे वी वर द फर्स्ट फंड टू सेट अप इन गिफ्ट सिटी इन गुजरात. And we have not just been targeting NRIs who want to put money into India, but even foreign nationals. I think it's a very exciting opportunity. Gift City today, taxation is very favorable. अगर आप 2-3 सालों के पहले देखें तो foreigners used to go to Singapore, Mauritius, Luxembourg, Cayman Islands. वहाँ पे जाके एक feeder fund से इंडिया को enter करते थे because they would get better taxation. But ये गिफ्ट सिटी ने बदल दिया है. गिफ्ट सिटी इज चीपर टू ऑपरेट देन अ मॉरिशस फंड बाय अ स्केल ऑफ 1:10 एंड इट इज अ वेरी क्लीन डायरेक्ट वे टू कम इनटू द कंट्री एंड इन्वेस्ट. लेकिन क्या करेंसी एक हेडविंड है आपके लिए इस प्रोडक्ट पे? मेरे ख्याल से नहीं. I mean the rupee until the last 6 months का depreciation last couple of years was fairly stable. हम ये account करते हैं कि currency depreciation will be in the ballpark of about 3-4% a year. And I don't think even going forward, I don't think we'll see those 7-8% depreciation a year kind of days. और अगर आप currency की भी बात करें तो we might be depreciating a lot versus America, but versus the pound, euro, Southeast Asian currencies, we're not doing so badly. India is not one of the worst performing countries. यहाँ world में आज क्या हो रहा है कि the dollar is becoming abnormally strong for reasons that one might not understand. अगर आप American economy देखें तो उनके पास हमसे भी ज़्यादा in many ways issues हैं with inflation, the debt and the amount of money they've printed. अगर कोई भी इकोनॉमी इतना पैसा प्रिंट करती है तो one would assume logically that currency's value should depreciate. But the dollar for many years, because of being the global currency, has become a safe haven. Right. निखिल, क्या अच्छा इसमें आपने PMS भी ऐड किया, तो मैं क्लैरिफिकेशन दूं. PMS और AIF अलग अलग दो हैं आपके. Correct. और प्री IPOs AIF में है. करेक्ट. तो प्री IPO AIF नहीं है. जो भी IPO होके लिस्ट होता है उस पे वो AIF में है. तो हम सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में फोकस करते हैं. हमारे AIF में ऑल द इन्वेस्टमेंट्स आर इन द टॉप 50 निफ्टी कंपनीज अलोन. We don't have any small cap exposure, mid cap exposure. PMS is a product which we have started newly. AIF has been around for close to 3 years now. PMS में again the ethos is very much to be very conservative and not focus on the short term, but figure out how to be more efficient, not charge fees like others, no middlemen. We're trying to figure out how we can deliver value to a client without too many leakages over a 5-10 year period. Right. निखिल, बहुत छोटा सा जवाब मुझे चाहिए. निखिल कामत इतने कंजर्वेटिव क्यों हैं? इतने काम एंड कंपोज कैसे रहते हैं इतनी नर्विंग मार्केट में? नहीं तो नीरज, I feel like when you start to become a better trader is when you realize कोई भी predict नहीं कर सकता कि कल क्या होगा. You have to start thinking if markets go up 10%, what will happen to your portfolio? If markets go down 10%, what will happen to your portfolio? And we think like that and we try to cover the worst case scenarios. इस कारण से शायद बाकी लोगों से थोड़ा ज़्यादा conservative है. करेक्ट, कंजर्वेटिव है लेकिन सक्सेस स्पीक्स इटसेल्फ. निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके नए वेंचर के लिए. और जैसा कि आपने कहा वर्ड ऑफ माउथ है, लेकिन वेबसाइट मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा वो रोरिंग है, इसमें कोई शक नहीं. बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वेंचर के लिए.